Welcome to all here in the session of mathematics. This is the first episode for the chapter complex number for class 11. Okay, before going to the complex number, first I'll write one equation, that is quadratic equation. You see, suppose we have to ask what is the solution of x square plus x plus 1 is equal to 0. देखो এটা ଗୋଟେ quadratic equation given. Okay, so you have to ask solve this one. That means you have to find the value of x. How could you find? From this equation, all of you know that here x square coefficient is a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. Then x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac root over by 2a. So if you will put here b is equal to minus 1 plus minus b square means 1 square is 1 minus 4 into 1 into 1, that is 4 into 1 into 1, root over of this by 2 into 1, that is nothing but the minus 1 plus minus 1 minus 4, that is minus 3 root over by 2. So here you should write एटी कौन लिखिलो 10 क्लास रे कौन लिखिलो सब जे टी वास्तव बीज मिलवा असंभव. बहुत जन पिला लिखि दउथिले असंभव. असंभव नुह संभव हबो. मैथमेटिकली यू हैव टू क्रिएट ए पॉसिबल थिंग. एटा असंभव नुह किंतु ताकू रियल माने कोन वास्तव रे यार समाधान बा वास्तव संख्या सेट रे यार समाधान बाहर करबा असंभव. तेणु वास्तव बीज मिलवा असंभव. ता माने x रे वैल्यू x इज नॉट बिलोंग्स टू r. r मीन्स set of real number. It is समझते जानते हो set of real number. Okay. So to find the solution of this problem, to find the solution of this equation, that is the value of x, the mathematician, Switzerland mathematician Euler. आउ थरे कहूची से कोटिकार mathematician थिले Switzerland रे mathematician, or you can say Swiss mathematician. Euler, he was the first to introduce the symbol iota, that is stands for I, which is equal to root over of square root of minus 1. से कौन करथिले ताल बुझी पारला किए से बाहर करथिले Euler. Euler is the first mathematician who was introduced iota. Iota is one of the Greek word. एटा कोटिकार word थिला Greek word. ताले ग्रीक वर्ड ये कोटिकार मैथमेटिशियन थिले स्विस मैथमेटिशियन किए थिले यूलर. को सिंबल बाहर कले आयोटा. आयोटा रु गोटे लेटर कौन नेले आई टा को से कौन कले तार वैल्यू केते नेले स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1. दैट सिंप्लाइज आई स्क्वायर केते गेला बोथ साइड रो स्क्वायर नहीं गले रूट ओवर स्क्वायर केते जो माइनस 1. So he was the first mathematician who was introduced the iota, that is the symbol I, and which represent as the square root of minus 1. Okay, बुझी पाइले समझते ताले introduce हे गला. ताकू भी in other words this one is called imaginary unit. आइटा को कौन को आज गला imaginary unit. केते जना को imaginary unit भी कहले, iota कहले, I कहले. So iota रू I उद्धार करा ला. I is equal to केते दिया ला represent as root over of or square root of minus 1. Then both side square नेले I square is equal to minus 1. So therefore 80 बाहर करिया सज हो गला. That means minus 1 plus minus 1 into 3 लिखिले root over of by 2. Minus 3 can be written as minus 1 into 3. That is minus 1 plus minus 1 जगह केते पुट कर देला I square, that is 3i square root over divided by 2, or in other words the value of this minus 1 plus root 3i by 2. I square root over के देला I, so minus 1 plus रहला root 3i by 2. तो वैल्यू बाहरी गला. तो किए पॉसिबल करैले स्विट्जरलैंड रे मैथमेटिशियन किए थिले यूलर. से कौन बाहर कले ग्रीक वर्ड गोटे उद्धार कले, दैट इज नोन एज आयोटा. IOTA. आयोटा रु गोटे लेटर आनले दैट इज I.
I को रिप्रेजेंट कर ले स्क्वायर रूट ऑफ -1 देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स I स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ओके। तो यही भली भाव में सपोज तुमको पचारा जड़े x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 then x is equal to square root of -1 this is nothing but the I. Suppose x square plus 4 is equal to 0 tale x square is equal to how much -4 then x is equal to -4 root over that is -4 root over means what -1 into 4 root over tale -1 जगह आम केते जानलु -1 is कार वैल्यू I स्क्वायर वैल्यू तो ये पकई देला 4I स्क्वायर रूट ओवर 4I स्क्वायर रूट ओवर प्लस -2I ओके ताले x वैल्यू बाहर पड़ला जोटा इम्पॉसिबल थिला 10 क्लास रे इन द सेट ऑफ रियल नंबर वास्तव बीज असंभव एक्चुअली वास्तव नहीं माने रियल रे रियल कौन रियल नंबर माने जोटा वास्तव रे अच्छी हला जोटा वास्तव नंबर किंतु वास्तव रे कहार स्क्वायर माइनस नेगेटिव हबो नाही इट इज क्वाइट इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन को जेते बेले तुमे जाउछ तो आयोटा को पाइल किए सी बाहर कले फर्स्ट मैथमेटिशियन स्विट्जरलैंड मैथमेटिशियन यूलर फर्स्ट इन्वेंट कले कौन आयोटा सेटा कोठिकार वर्ड थिला ग्रीक वर्ड तादर गोटे लेटर कौन आनले आई टा को रिप्रेजेंट कौन करेले स्क्वायर रूट ऑफ -1 देन I स्क्वायर -1 ताले हमें प्रोसीड कर जीवा वर्तमान ताले एटा इन्वेंशन हे गला परे तापर कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप करा गला तो रियल नंबर को एक्सपांड करा गला जेतबेले प्रथम हेतिला नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन टा कोन हेतिला सेट ऑफ नेचुरल नंबर सब जानि छ एगुडा नेचुरल नंबर गणन संख्या मानक सेट W or n star you can say that is expanded natural number माने अछि समस्त मन expanded natural number तापरे WN स्टार कोई परिवो एक्सपेंडेड नेचुरल नंबर कोई परिवो होल नंबर कोई परिवो सामग्रिक संख्या आउ कोन कोई परिवो कोन एक्सपेंडेड नेचुरल नंबर को ओडिया रे कोन कहबो नेचुरल नंबर माने कोन गणन संख्या संप्रसारित गणन संख्या संप्रसारण एक्सपांड कराला एक्सपेंडेड नेचुरल नंबर W पई कोन होल नंबर W स्टैंड्स फॉर होल नंबर सामग्रिक संख्या ओके तो इंग्लिश वर्ड गुडा जो गुडा कहूची मन रख दियो नेक्स्ट 1 2 तापर आसला सेट ऑफ इंटीजर दैट इज बिट 3 z और I कोई परिवो z इज द सेट ऑफ इंटीजर पूर्ण संख्या सेट ऑफ इंटीजर्स ओके देन सेट ऑफ रेशनल नंबर q सेट ऑफ रेशनल नंबर तापर एक्सपेंड कराला r सेट ऑफ रियल नंबर बुझी पाइल समस्ते ताले फर्स्ट सेटटा कोन हला गणन संख्या गणिया पई यूज कलु दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर माने रख समस्ते देन n स्टार और w एक्सपेंडेड नेचुरल नंबर और यू कैन से होल नंबर z इज द सेट ऑफ इंटीजर प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर नेगेटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 सहित पॉजिटिव नेचुरल नंबर नेगेटिव नेचुरल नंबर को नहीं गले सेगुडा कोन को जीवा सेट ऑफ इंटीजर पूर्ण संख्या मानकर सेट ताको इंग्लिश में कौन कह सेट ऑफ इंटीजर नेक्स्ट q इज द सेट ऑफ रेशियोनल नंबर परिमेय संख्या मानकर सेट ऑफ रेशियोनल नंबर q डास हे गले सेट ऑफ इरेशनल नंबर सो q यूनियन q डैश माने रेशियोनल नंबर एवं इरेशनल नंबर कर यूनियन संयोग यूनियन माने बुझी परछो सेट थ्योरी पढाबो सो r इज द सेट ऑफ रियल नंबर ओके एति पन्त बुझी गलो एई रियल नंबर पर्यंत सब गुडा को एक्सपैंड करी रियल नंबर पर्यंत तुमे पढ़ी के आस्थिलो अप टू 10 क्लास 11 क्लास आउट के एक्सपैंड कर दियो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कराला कहा को एक्सपैंड कराला रियल नंबर को एक्सपैंड कराला हला तो आमे प्रथमे पढ़िबा इंटीजर एई जो रियल नंबर को एक्सपैंड कराला कार हेल्प रे आयोटा रो हेल्प रे तो आयोटा विषय रे पढ़िबा वर्तमान ओके सो मेक इट ए नोट फर्स्ट नाउ विल गो टू द integral power of iota okay so make it a note first now we'll take integral power of iota that it may be positive integral power or it may be negative integral power kemti dekho how is it suppose positive integral power of I is equal to how much root over of -1 then if you take I square then -1 root over a square that is nothing but the -1 na jani silent suppose you have to ask I cube
आई क्यूब माने कौन आई स्क्वायर इंटू आई ठीक ना नहीं आई स्क्वायर केते बाहर आमर -1 तो आई स्क्वायर रिप्लेस बाय -1 इंटू आई ताले केते गला माइनस आई मन रख आज आई क्यू रो वैल्यू आज मन रख केते हला माइनस आई फोर्थ मीन्स केते आई स्क्वायर रो स्क्वायर आई स्क्वायर केते तुमरो -1 रो स्क्वायर केते गला 1 ओके उडी फॉलो त माने आई फोर्थ हे गला 1 आई फिफ्थ देखिबा केते होची आई फिफ्थ केते गला आई फोर्थ इंटू आई फोर्थ केते हिची 1 इंटू आई दैट इज नथिंग बट द आई सिक्स केते हबो आई स्क्वायर रो क्यूब आई स्क्वायर केते -1 रो क्यूब केते हला -1 ताले आई सिक्स केते गला बुझि पाइलो -1 आई सेवेंथ आई सिक्स इंटू आई सेवेन टा केम लिखिबो आई सिक्स इंटू आई सिक्स केते हिची -1 दैट इज -1 इंटू आई नथिंग बट द माइनस साइड आई 8 इज आई स्क्वायर रो फोर्थ आई स्क्वायर केते -1 टू द पावर फोर्थ दैट इज 1 आई टू पावर 8 1 ताले देखिलो 1 कोटा होची आई फोर्थ इज इक्वल टू 1 आई टू पावर 8 इज इक्वल टू 1 so from this calculation 4 conclusions are there चारिटा conclusion पाउचो कौन कहलो फर्स्ट हला कौन देखो आई टू पावर फोर्थ हला 1 आई टू पावर 8 हला 1 आई टू पावर 12 जदि भी बाहर करिवो सेटा कते हो ना आई स्क्वायर होल टू पावर 6 -1 होल टू पावर 6 b1 ता माने कौन एथरु जानलो जदि 4 रो मल्टीपल्स हबो माने 4 द्वारा विभाज्य 4 रो मल्टीपल्स माने 4 रो गुणितक मल्टीपल्स का कहे गुणितक हैला सो 4 रो जदि मल्टीपल्स हबो 4 8 12 16 20 एमती 4 द्वारा जदि विभाज्य होइतिबो पावर कार पावर आई रो पावर देन तार वैल्यू केते होची 1 सो आई टू द पावर 4n इज इक्वल टू 1 दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन ओके मन रखो बॉक्स भीतर जोटा लिखली आई टू पावर 4n इज इक्वल टू 1 व्हाई सिंस 4n इज डिविजिबल बाय केते 4 सपोज तुम पचाल आई टू पावर 2000 एटा आई द्वारा 4 द्वारा विभाज्य ना नहीं विभाज्य ताले डायरेक्ट आखि बुझी कहबो 1 तुम जण पचाल आई टू पावर 100 केते रे ताले सीधा कहबो 1 काहे कि 100 को 4 द्वारा डिवाइड करले डिविजिबल हो जाउची जे 4 द्वारा डिविजिबल आई रो पावर ए पावर आई रो पावर जदि 4 द्वारा डिविजिबल हेतिबो तार वैल्यू केते 1 उडी फॉलो और नॉट नेक्स्ट जीवा जदि 4 रे डिविजिबल न होला 4 रे डिवाइड करले 1 बळिला दैट मींस देखो आई टू पावर 5 आई टू पावर 5 देखिलो केते वैल्यू होईची आई टू पावर 5 को देखो आई टू पावर 5 रे केते होईची आई हेईची आई टू पावर 9 जदि जण बाहर करियो आई टू पावर 9 इट सपोज बाहर करला आई टू पावर 9 त माने आई टू पावर 8 इनटू आई टू पावर 8 केते हेईची आई टू पावर 8 हला 1 इनटू आई दैट इज आई हला बुझि पाइलो सो आई टू द पावर 4n प्लस 1 तमने तब केते लिखिबो आई टू पावर 4n इनटू आई टू पावर 4n वर्तमान केते हिच 1 इनटू आई इज इक्वल टू केते आई तले मन रखो तले एनी पावर आई रो पावर जदी डिवाइड करलो रिमाइंडर 1 हला रिमाइंडर 1 माने बुझि परछो तो सपोज आई टू पावर 25 पचला जणे 25 को डिवाइड कर दबो केते रे डिवाइड करियो सब बळे आयोटा अछि माने 4 रे डिवाइड करिवो 4 रे डिवाइड करले केते हला 4 6 से 24 रिमाइंडर माने बुझि परछो तो भाग शेष रिमाइंडर केते हला 1 दैट्स व्हाई आई टू द पावर 1 दैट मींस आई त माने जहा रिमाइंडर रहबो सेटा ही हो आई रो पावर हला बुझि पाइलो त माने जेति की पावर थिबो 4 रे डिवाइड कर देले जेति की रिमाइंडर रहला रिमाइंडर जेति गला एटा नुओ कोसेंट नुओ भागफल नुओ भाग शेष रिमाइंडर जेति गला सेटा पावर रे रख दो दैट इज आई टू पावर 1 सपोज आई टू पावर 4n प्लस 2 दैट मींस दिस वन कैन बी रिटन एज आई टू पावर 4n इनटू आई स्क्वायर आई टू पावर 4n केते 1 आई स्क्वायर केते -1 तले 1 इनटू -1 केते गला -1 तमने सपोज तुमको पचाला आई टू पावर 102 जण पचाला आई टू पावर 102 रो वैल्यू केते तमे 102 को कोथरे डिवाइड करियो सब बळे मन रखो 4 रे डिवाइड करियो 4 रे डिवाइड करले केतेला 25 4 जे 100 बळला केते 2 तले एई 2 टा ही आंसर हो आई टू द पावर 2 पावर जे कोन लिखिबो ना रिमाइंडर जहा हो 4 रे डिवाइड करी कि रिमाइंडर जहा हो सेटा ही लिखा जाय तले आई स्क्वायर केते जानि छैलनी आई स्क्वायर जानि छ केते आई स्क्वायर इज इक्वल टू केते -1 सो आई टू पावर 4n प्लस 2 भी -1
तेणु जिते डिवाइड कर जदि 4 रे डिवाइड कले सी कौन हो जाऊँगी सपोज आई टू पावर 1026 या 4 रे डिवाइड कले के 2 बढ़ कारण ये दुईटा शेष दुईटी अंक को लेकिन गठित संख्या को 4 रे डिवाइड कले सेटा 4 द्वारा विभाज्य सूत्र जानिछ सो 424 2 बढ़ला आई स्क्वायर के माइनस माने टोटाल संख्याटा को डिवाइड करने बदल में शेष दुईटी संख्या को डिवाइड करदे भी हो नहीं कौन जहाँ बड़ो से हम रिमाइंडर सो रिमाइंडर जहाँ पावर रे शेयर कर बुझीपारे समस्ते सो आई टू पावर 4n + 2 इज इक्वल टू हाउ मच -1 आई स्क्वायर हम -1 आई टू पावर 4n + 3 कारण 4 रे डिवाइड कले मैक्सिमम रिमाइंडर केते हो पारिबो 3 ताला आई टू पावर 4n * आई टू पावर 3 आई टू पावर 4n 1 आई टू पावर 3 केते आई टू पावर 3 बर्तमान कहितली केते हो -i ताले -i ओके बुझीगल समस्ते ताले फास्ट मन रखिलो आई टू पावर 4n = 1 आई टू पावर 4n + 1 है आई टू पावर 4n + 2 है -1 आई टू पावर 4n + 3 है -i ताले ये चारटा ही आंसर होची 1 i -1 -i now we'll take negative integral power of i okay so you see here suppose i to power -1 i to power -1 केता हो 1/i अच्छा डिनोमिनेटर रे i रुहेनी जमा सब न्यूमरेटर रखियो अच्छा डिनोमिनेटर आई रही माने कौन कले रही ताने आई ऊपर तल गुण दब ताले ऊपर तल कहीं गुणल कारण तलटा आई स्क्वायर आई स्क्वायर -1 जानी सारे सो दिस इज नथिंग बट आई * 1 i/i स्क्वायर वैल्यू के जानी सारे -1 सो i/-1 दैट इज नथिंग बट द माइनस है ताले आई टू पावर -1 के -i आई टू पावर -2 जन पचाला ताले 1/i स्क्वायर पुणी के जानी -1 ताले 1/-1 के गला -1 आई टू पावर -3 जन पचाला के 1/i टू पावर 3 आई टू पावर 3 रे कौन मल्टीप्लाई कल आई मल्टीप्लाई कर दो आई मल्टीप्लाई कर देले के गला 1i/i टू पावर 4 आई टू पावर 4 के 1 ताले i/1 दैट इज नथिंग बट द i बुझी परछ नेगेटिव पावर सपोज जन पचाला i टू द पावर -331 बाहर करो केते पचाला i टू पावर -331 तुम कौन करियो 1/i टू पावर 331 को कोथरे डिवाइड करियो सिखे देली लास्ट 2 डिजिट को नहीं कि जो संख्याटा 31 रे 4 होला 428 28 ले बढ़ला केते रिमाइंडर केते 3 सो रिमाइंडर 3 तमने 1/i³ ताले 1/i³ हला 1/-i अच्छा तले i रुएनी ताले ऊपर गोटा i मल्टीप्लाई कली तले गोटा i मल्टीप्लाई कली ताले i/-i स्क्वायर पुनी i स्क्वायर -1 दैट इज i/- आगुर थिला -1 आसिला दैट इज i/1 दैट इज नथिंग बट द i ओके बुझी पाइलो ताले i टू पावर -331 केन बाहर कराला बुझी पाइलो हला ओके नाउ विल डू सम प्रॉब्लम्स सो मेक इट ए नोट फर्स्ट मेक इट ए नोट now we'll take some examples to increase your confidence level you see suppose you have to ask to evaluate the value of find the value of i to power 335 plus i to power 3012 i to power 335 को कोथरे डिवाइड करियो 4 रे डिवाइड करियो 4 रे डिवाइड कले केते होची 35 को डिवाइड करिया संगे समान 4 * 32 35 को डिवाइड कले 335 को डिवाइड न करी कि लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर दबो 4 * 32 बढ़ला के 3 ताले के गला 3 बढ़ला तमाने आई रो क्यूब हला सीधा जति बढ़िबो रिमाइंडर दैट वन शुड बी रिटन एट द पावर ऑफ आई टू पावर 3012 लास्ट 2 डिजिट केते अछि 12 टा 4 रे डिविजिबल ले केते हिजो 1 डिविजिबल ले i 4 तो वैल्यू 1 आई टू पावर 4n = 1 सो i क्यूब टा केते हम जानि छु i क्यूब टा -i plus 1 that is 1 - i you can write 1 - i that's your answer okay now I will take this example that is 1/i to power 231 i to power 231 माने 31 को डिवाइड करियो 4 7 8 28 3 i क्यूब प्लस i to power 20 4 रे डिविजिबल 4 5 जे 20 डिविजिबल त माने केता हला 1 i क्यूब माने कोन 1/-i प्लस 1 अच्छा आमर डिनोमिनेटर रे i रुहेनी ऊपर तळ i मल्टीप्लाई करिया i मल्टीप्लाई कले i/-i स्क्वायर प्लस 1 दैट इज i स्क्वायर पुनी -1 -i तमने केते हला i/-1 i स्क्वायर वैल्यू -1 प्लस 1 ताले एटा केते हला 1 + i माइनस प्लस 1 + i ओके डू यू फॉलो नेक्स्ट को चलो एग्जांपल 3
आई टू पावर 30 माने केते को आई टू पावर 30 माने केते 4 रे डिवाइड करला आई स्क्वायर 4 7 28 बढ़ला केते 2 अच्छा 80 को 4 रे डिवाइड करो 4 रे डिविजिबल हो गला डिविजिबल हो जिवो माने 1 लिखियो बुझी परछो समस्ते एई पावर को 4 रे डिवाइड करिवो जदी डिविजिबल हो गला डिविजिबल माने विभाज्य हो गला ताले ता जगह रे 1 लिखियो कारण आई टू पावर 4n इज इक्वल टू 1 ओके रिमाइंडर है 4 7 28 2 बढ़ला तेणु आई स्क्वायर प्लस आई टू पावर 128 डिवाइड कले के 1 प्लस एटा आई टू पावर 50 बढ़ला के आई टू पावर 50 पुणी के 4 रे डिवाइड करो के 48 12 48 गले 2 आई स्क्वायर दैट इज आई स्क्वायर पुणी के -1 +1 -1 आई स्क्वायर -1 -1 +1 -1 +1 कैंसल दैट इज द वैल्यू इज 0 ओके बुझी पाइल आ गोटे आई टू पावर n प्लस 1 प्लस आई टू पावर n प्लस 2 प्लस आई टू पावर n प्लस 3 सपोज देइछि एमती पैटर्न ताले कोन करियो को आई टू पावर n केबटा सेम एज इट इज लिखि दियो आई टू पावर n प्लस 1 माने कोन आई टू पावर n इंटू आई टू पावर 1 अच्छा आई टू पावर n प्लस 2 माने कोन आई टू पावर n इंटू आई स्क्वायर आई टू पावर n प्लस 3 माने कोन आई टू पावर n इंटू आई क्यूब अच्छा आई टू पावर n taking as common so we have left with 1 plus I square plus I cube isn't it that is I to power n eta 1 plus I square ta kete -1 I cube ta kete minus I बुझी पाइल ना नहीं I square जगह रे -1 I cube पाखरे minus I मन रख दियो समझते ताल प्लस I minus I cancel -1 + 1 cancel so that is nothing but the I to power n into 0 which is equal to 0 okay बुझी पाइले समझते नेक्स्ट आ गोटे एग्जांपल नबा एग्जांपल 5 suppose you have to ask prove that I to power 18 plus 1 by I to the power 24 whole ro cube is equal to 0 एटा प्रूव करिया देछि सपोज I to power 18 1 by I to power 24 रो whole रो cube is equal to 0 ताले LHS केते को LHS I to power 18 plus 1 by I whole to the power 24 रो टोटल रो whole रो cube ओके I to power 18 माने 4 डिवाइड करला I स्क्वायर सो दिस इज I स्क्वायर 1 by I माने कोन I ऊपर तळे मल्टीप्लाई कर दो ताले ऊपर तळे मल्टीप्लाई करले केते हे गला I by I स्क्वायर होल टू पावर 24 रो होल रो केते क्यूब अच्छा I स्क्वायर माने केते -1 I by I स्क्वायर -1 तेनु एटा कोन हे गला -I टू पावर 24 अच्छा 24 माने 4 रे डिविजिबल माने 1 हे जिवो यार वैल्यू ताले +1 होल टू द पावर क्यूब -1 + 1 कोन हे गला कैंसिल 0 रो क्यूब केते हला 0 व्हिच इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड ओके सेमती भी प्रूव कर परियो बुझो एटा जेमती कले हबो तुमे जेमती सिंपलीफाई करो सेमती करियो I to power 24 कर देबो सपोज जने कला नाइ मु सर I to power 24 कर देबी I to power 24 कर देले केते गेला 1 by 1 हे गेला तो I स्क्वायर केते हे गेला -1 एटा को डायरेक्ट कर परियो I स्क्वायर हला -1 एटा डायरेक्ट I to power 24 माने कोन 4 रे डिवाइड कर दो 4 रे डिवाइड करले 1 हला 1 by 1 -1 + 1 होल की 0 डायरेक्ट भी हे परियो बुझि पाइलो ना नहीं तो सिंप्लीफिकेशन अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ यू कैन डू ओके तो रूल गुडा फॉलो करिवो रूल गुडा कोन हला I रो वैल्यू अगेन आई एम टेलिंग आयोटा की बाहर करथिले आउतरे को दैट इज द मैथमेटिशियन यूलर कोटिकर मैथमेटिशियन स्विट्जरलैंड रो मैथमेटिशियन और यू कैन से स्विस मैथमेटिशियन को लेटर आनी थिले I लेटर आनिले कोठू आनले को वर्ड रु ग्रीक वर्ड ता कोन थिला आयोटा हला बुझि पाइलो समस्त मन रखिलो आयोटा रु I लेटर आनले ताकू रिप्रेजेंट करेले √(-1) और यू कैन से दिस वन इज द इमेजिनरी यूनिट ओके I is equal to √(-1) I square is equal to -1 I cube is equal to -I fourth is equal to 1 बस that's all बुझि गलो okay so make it a note now I will take another different types of problem so please keep it in your memory that 1 plus I square plus I cube ता माने एटा कोन हला I to power 0 केते 1 plus I स्क्वायर केते हला -1 I क्यूब केते हला -I ताले केते हला -1 + 1 plus I केते हला 0
कौन एथरू जानलो कहलो कंक्लूजन जदि I टू पावर 0 I टू पावर 1 I टू पावर 2 I टू पावर 3 चारिटा सीक्वेंस ऑर्डर रे रहउची ताले तांकर वैल्यू इज इक्वल टू 0 हला ताले सपोज तुमको पचरा जीवा I टू पावर 330 प्लस I टू पावर 331 प्लस I टू पावर 332 प्लस I टू पावर 333 केते हला एति पचरला तुम जने पचरले I टू पावर 330 आउ डिवाइड करिया दरकार नै सीधा देखिलो सीरियल नंबर अछि पावर रे 30 31 32 33 330 331 332 333 यार वैल्यू केते हबो 0 केमती हला तुमको सर केमती तो करिक देखंतु 30 को डिवाइड कर जो 4 रे केते गला I स्क्वायर 31 को डिवाइड कर दे I क्यूब 32 डिवाइड हो गला त माने 1 33 को डिवाइड करो 1 हला I स्क्वायर केते को -1 I क्यूब केते को -I +1 +I माइनस I +1 -1 बुझी पाइलो ताले जदी सीक्वेंस रे अछि पावर गुडा ताले निश्चित भाव चारिटा रे 0 हो ताले जदी पांचटा दे देली सपोज एई क्वेश्चनटा I टू पावर 225 प्लस I टू पावर 226 प्लस I टू पावर 227 प्लस I टू पावर 228 प्लस I टू पावर 229 ताले एई चारटा रे कोन होबो 0 होबो I टू पावर 225 प्लस I टू पावर 226 प्लस I टू पावर 227 प्लस I टू पावर 228 केते हला 0 कहीं के 0 हला सीक्वेंस रे अछि चारटा पावर ओनली रहिला I टू पावर 229 एटा पुनी 29 को डिवाइड कर दो 4 रे 4 7 जे 28 ताले I रहिला I टू पावर 1 दैट इज I आंसर हला I बुझि पाइला ना नहीं सपोज एमती दला I प्लस I स्क्वायर प्लस I क्यूब डॉट 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 I टू पावर 100 को केते वैल्यू अब कर परियोनी चार चारटा कर दो परा चार चारटा कर देले केते होची 0 ताले चार चारटा रे बळिबो किछि की 25 टा एमती चार चारटा हो ना I फोर्थ एति बंद ये चारटा रे गोटे पेयर सेमती आउ चारटा एमती केतेटा हो 25 टा बिकॉज़ एटी केते बंद अछि I टू 100 1 रू 100 बंद अछि ताले 0 0 0 25 टा 0 मिसी केते ला 0 so that's all for the today's session. In the next episode we'll discuss what is the complex number, that is definition of the complex number, and addition between the two complex number, multiplication between the two complex number, and what is the a plus bi form. You have to express any complex number in the form of a plus bi. How is it? Okay, we'll discuss these type of problems in the next episode. First you will take some homework and do it yourself. Okay, these are the home assignment you see, these are for you. If you will face any doubt or any query, then you can ask me, then I will clear your doubt. Okay, so until then, goodbye, thank you.